बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सीपैक टाइम के साथ मैं हूं यासिर रहमान और मेरे साथ हैं My name is Aru. Welcome to the Cpec Time. नाज़रीन, आज के सीपैक टाइम में हम डिस्कस करेंगे कि एक तो आला सतह चीनी वक्त भी पाकिस्तान में है, चीनी वाइस प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान में है और उसके साथ साथ सीपैक में ख़ास तौर पे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं इसकी बहुत बात हुई है, रशकई के हवाले से बहुत बात हुई और जो तीसरी डायमेंशन है जिस पे हम बात करने की कोशिश करेंगे वो सीपैक की सिक्योरिटी के हवाले से है। इसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा आने वाले वक्त में, जिस तरह से सीपैक के प्रोजेक्ट्स मजीद आगे बढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ, वी आर ऑनर्ड टू हैव मिस्टर चाओ ली जॉन, डिप्टी चीफ ऑफ मिशन चाइना's embassy in our program. So thank you very much for joining us again in the CPEC time. और शकील अहमद रामिद साहब तजियाकार हैं सिक्योरिटी उमूर पे बात करने के लिए, मईशत के हवाले से और पाक चाइना रिलेशनशिप के हवाले से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील अहमद रामिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। Aru, you want to ask first question? Okay. Mr. Zhao, we are heard that Chinese Vice President Mr. Wang Qishan will visit Pakistan. And what he will bring to the Pakistan? Yes, I think Vice President Wang Qishan is visiting Pakistan. He arrived in Pakistan today, and today, they had official meetings with the President and also the Prime Minister. I think that at the time we are talking, they are going to witness. The Prime Minister and VP Wang will witness the signing of agreements between the two countries. There are at least 4 agreements. One is on agricultural framework. One is on MPD, mouth and food disease. One is the third one is a grant from the Chinese government about 1 billion RMB yuan to Pakistan. The fourth one is an exchange of note, which is about 40 million RMB yuan, which is about disaster relief. Providing Chinese government is providing disaster relief to the Pakistani government. And besides this, signing ceremony, and the two leaders will also unveil 4 plaques. So there are 4 projects. One is this Rashakai Special Economic Zone. During Prime Minister Imran Khan's visit to China, they signed these agreements between the Cpec and the Chinese company. This time it will be, they will unveil this plaque on the special economic zone. Number 2, it will be the inauguration of a transmission line. This transmission line is from Montreal, which is near Karachi, to Lahore. So this transmission line is a very important project under CPEC. It will help to transfer, electricity, from some power plants like Port Qasim power plant, like Hub power plant, to those regions near Lahore. Then the third the third project is there's a Confucius Center in the Punjab University. This is a joint project between Punjab University and Jiangxi Normal University. This is basically a Chinese language school, in which Pakistan, is badly needed. So they have in Pakistan now more and more people are trying to learn the Chinese language.
So this Confucius Institute or Chinese language school could be, a very good step in this direction. So we hope, this, agreements and projects they could, help with the development of our relations. The fourth one, there is another project which is a regional technical center by Huawei company. Okay. This company, Huawei company has decided to set up this center in Pakistan. Great. This is center this is good news, and it showed the confidence of Huawei company to Pakistan, because this is a regional center. It covers 13 countries, in South Asia and the Middle East. Oh. Yeah, so that's the agreements and the projects covered by this visit. Of course, this visit will help with our bilateral relations, in a few areas. And for example, in terms of Cpec, because we are now we have entered this second stage of Cpec. We call it the stage of extension and broadening. We through this visit, we have identified more new projects, and we hope that this visit will help to promote Cpec construction. And also we have this in terms of people-to-people exchanges. I think this visit will also bring the two countries closer in this respect. As I mentioned, there is inauguration of this Confucius Institute, yeah. And actually, in China we are encouraging Pakistani students to learn Chinese or other subjects in China. Nowadays, Pakistani students is, the number of Pakistani students in China is number 3. I think this is the total number is, I think, more than 28,000. Okay. So this is a big increase. If you check, the number of the year 2000, that is about almost 19 years ago. This is only 2,000 Pakistani students who were studying in China. Yes. And also, I think China has announced that we will invite 100 Pakistan youth delegation to visit China this year. Okay. And this is also a good step in this direction. We are also, setting up not only this Confucius Institute in Lahore. We have 4 this Confucius Institutes throughout Pakistan. We also set up 2 Confucius classrooms in Pakistan. Okay. And the demand is still increasing. So this is also one priority or area. The third thing, I think, Vice President Wang is very interested in the history of Pakistan. Especially, you have a very glorious history of Gandhara civilization. You have Mohenjo-daro in the Indus civilization, and I think that during his visit he will try to learn more about the history of Pakistan. We'll try to show him more of these places during his trip.
in Pakistan. It's kind of a cultural and also, to see Pakistan's rich history as well. Yes. So, coming to Mr. Shakil Rame, Shakil Sahab, CPEC जैसे से आगे बढ़ता जा रहा है, प्रॉस्पेक्ट्स पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी वाइड है, बल्कि रीजन के हवाले से भी काफ़ी हैं. रिसेंट 12 मई को एक जो नाखुशगवार वाक़या हुआ और जो आप कह सकते हैं कि जो नए सेयर्स हैं पाकिस्तान और CPEC के हवाले से जो शुरू दिन से ही मुतहर्रिक हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जितनी जल्दी जितनी सरहद के साथ उसको काउंटर किया, ये कितना इम्पोर्टेंट है और कितना सेफ है CPEC फ्रॉम दीज फूल्स डिवाइसेस और दीज फूल्स जो है अटैक्स? देखें, जो सिक्योरिटी का डिमेंशन कर रहे हैं ना, कि जिस वजह से जिसको हम अगर डिस्कस कर रहे हैं आज, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा CPEC प्रोजेक्ट है, इट्स वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि दुश्मन उसी पे हमला करता है जिससे उसको खतरा होता है कि ये फ्यूचर में जाके उसकी यानी कि डायनामिक्स को चेंज करेगा. तो ये एक इंडिकेटर है चीज का कि CPEC इज गोइंग वेरी सक्सेसफुल, इनको बहुत कामयाबी से अपना सफर तय कर रहे हैं. और दूसरी बात है जिसपे हमें ध्यान देने की जरूरत है. देखें, हमें वो इंसिडेंट नजर आता है जो हो जाए, हमें वो नजर नहीं आता जिसको हम काउंटर कर रहे होते हैं, यानी कि बैक साइड पे जाके इंटेलिजेंस बेसिस पे नंबर ऑफ इंसिडेंट जिसको वो पहले काउंटर कर रहे होते हैं. तो ये तीसरी चीज कि जितनी आप कहते हैं कि जितनी स्विफ्ट तरीके से इसको उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, ये स्ट्रेंथ शो करता है कि दुश्मन अपने मुकाबला यानी कि मकासद में नाकाम हुआ है. और इसमें उसकी ये बात भी शो करता है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं कि वो बड़े यानी कि इफेक्टिव तरीके से इसको काउंटर कर रही हैं. मगर जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसको हमें 2-3 लेवल पे देखना पड़ेगा. एक तो यह है कि जब हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, दूसरा क्या है कि एक्सटर्नल क्या है, और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और जो कि कंस्पिरेसी थ्योरीज है. अब देखें, जो इंटरनल है तो हमें छोटी छोटी चीजों पे लड़ना छोड़ देना चाहिए. अब यानी कि जो कभी बात करते रहे रूट पे लड़ना शुरू हो गया, उस पर ये हो गया वो हो गया. इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं कि जो जिनका नाम और लेते हैं, मगर उनका अक्सर जो मकसद होता है, मतलब वो टारगेट होता है उसका CPEC. हमें उनको इंटरनली सॉल्व करना है. दूसरा देखना है जो कि रीजन में यानी कि रीजनल कंटेक्स्ट में चीजें हो रही हैं. मतलब देखें आप जो अभी जो ईरान और US की एक्सक्लूडेशन है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिस इज आल्सो वन वे कि आप CPEC को प्रेशराइज करने का है. क्योंकि जब हार्मोज पे आप उसको जाके ब्लॉकेट करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब आप ऑयल की मूवमेंट को रोकेंगे, और पाकिस्तान चाइना के लिए ऑयल यानी कि जो वहां से ऑयल आता है उसकी मूवमेंट को आप रोक के इसको डैमेज करने की कोशिश करेंगे. तो इस तरह के भी टैक्टिक्स होंगे. तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टैक्टिक्स होगा वो होगा मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को प्रेशराइज करना. मसलन FATF, वहां पर देखें जब पाकिस्तान में नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में आगे जाके इन्वेस्टमेंट आनी है. अब कर क्या रहे हैं कि पाकिस्तान कभी ग्रे लिस्ट में बात करते हैं, कभी ब्लैक में करते हैं. होगा क्या, अगर खजाना खासा लिस्ट में पाकिस्तान चले जाता है तो इसका मतलब यह कि जो भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा उसके अकाउंट की सिक्योरिटी शुरू हो जाएगी. कोई भी हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि FATF का मेंबर कौन है, इंडिया भी इसका नहीं, वो बात कर रहे हैं ना. यानी ये इस तरह की टैक्टिक्स भी होंगे. एक तो है ना डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट जिसको हम कहते हैं जान माल का, जो हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टी पे या लाइफ की थ्रेट होती है, एक तो वो है. एक है इनडायरेक्ट, यानी जो आपके यानी कि क्या कहते हैं आपके इन्वेस्टर को डिस्कस करना इंटरनेशनल को कि जी देखें वहां आप जाएंगे सिक्योरिटी ज्यादा होगी तो ऐसे होगा वैसे होगा. जो तीसरी चीज है कि जो सबसे अहम है मेरी नजर में वो सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है, जो इसको कभी टैग करते हैं जियो स्ट्रेटेजी को ले जाते हैं, कभी टैग करते हैं ये मुकाबला है, कभी कहते हैं जी ये है, कभी कहते हैं वो है. अब उस प्रोपेगेंडे को हमने कैसे काउंटर करना है, उन कंस्पिरेसी थ्योरीज को कैसे काउंटर करना है. एक तो ये है ना कि हम सिंपल कहें जी नहीं कुछ भी नहीं है बस खत्म बात. नहीं, जो बेस्ट वे होता है कि आप सॉलिड फैक्ट्स एंड फिगर के साथ उसको नेगेट करते हैं. मैं देखें एक बंदा बात करता है अच्छा इसका ये रिजल्ट, उसको बताएंगे ऐसा नहीं ऐसा होगा. मतलब कोई बात करता है CPEC की इंटरफेरेंस है, तो हम उनको डॉक्यूमेंट जो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट कंपेयर करते हैं. CPEC को मार्शल प्लान को कंपेयर करो. मार्शल प्लान में तो आपने डायरेक्ट लिखा हुआ था कि आप इसकी फॉरेन पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी को करोगे, चाहे जन की यूरोप की को इन्फ्लुएंस करोगे. CPEC में डॉक्यूमेंट में तो ऐसी कोई चीज नहीं लिखी हुई, ना BRI के डॉक्यूमेंट में ऐसी कोई चीज लिखी हुई है. तो ये सिक्योरिटी का एक और डिमेंशन है, क्यों इसको सॉफ्ट कहते हैं, सॉफ्ट डिमेंशन. अब इस सॉफ्ट डिमेंशन को जब तक हम काउंटर नहीं करेंगे इसकी जो वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी है उसमें इश्यूज आते रहेंगे. मगर आज ये जानने के अल्हम्दुलिल्लाह आप जब BRI की भी क्या कहते हैं कि वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसी तरह CPEC भी बढ़ रही है. हाँ, अब हमें फ्यूचर के लिए भी CPEC में कुछ चीजें करनी पड़ेंगी. देखिए मेरी नजर में जो CPEC में जो फंडामेंटली इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए था ना, वो अभी जैसे DCM साहब फरमा रहे थे, एग्रीकल्चर फ्रेमवर्क. पाकिस्तान की इकोनॉमी को शॉर्ट रन में अगर कोई चीज कंप्यूटर्स दे सकती है वो है एग्रीकल्चर.
کیونکہ یہ ایگریکلچر میں 3-4 مسائل کو حل کرے گی. نمبر 1 فوڈ انسیکیورٹی کو, نمبر 2 پاورٹی کو, نمبر 3 ہمارے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جو کاٹن نہیں ملتی اس کے را مٹیریل, نمبر 4 لیدر انڈسٹری کو, نمبر 5 ہمارے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس میں جو اس کی انویسٹمنٹ آئے گی, ان چیزوں کو کیٹر کرے گی. میرا خیال کرتا ہے پاکستان شارٹ ٹرم میں جو سب سے زیادہ جس سے بینیفٹ کر سکتا ہے وہ ایگریکلچر فریم ورک ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو انڈسٹریل زون ہے. دیکھیں ہم انڈسٹریل زون کی اسپیشل اکنامک زونس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 5 سال سے ہم شور بڑا سن رہے ہیں, مگر ہماری گورنمنٹ نے کوئی پالیسی نہیں دی. ابھی بھی وہ 2012 کا ایکٹ کی بات ہو رہی ہے آج بھی. اب دیکھیں جب تک پالیسی نہیں ہے, آپ کے پاس پراپر فریم ورک نہیں ہے, آپ جتنی مرضی باتیں کرتے ہیں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں نا ہوتا. مطلب میں جہاں میں بات کرتا رہوں جی میں جا کے اسپیس پہ جانے والا ہوں, میں اسپیس پہ جا رہا ہوں, میں اسپیس پہ پیسے نہیں ہیں یا کوئی چیز نہیں ہے, پلان نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ یعنی کہ یہ چیزیں بھی جو ہے نا یہ انٹرنل کنفلکٹ کو رائز کرتی ہیں. پھر لوگ کویشچن کرتے ہیں یار پچھلے 5 سال سے بات کر رہے ہیں تو پیدا کیا کیا آپ نے, آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے, اس کا مطلب سیریس ہی نہیں ہے. اور جو تیسری چیز ہے جس کو ہمیں بریک کرنا ہے بینگ اے پاکستانی بہت اسٹرانگلی, دیکھیں کچھ جو ہمارے کرنے کے کام ہیں ہم نے کرنے ہیں, چائنا نے آ کے نہیں کرنے. ہمیں اپنی اسکل ڈیولپ کرنی ہے, چائنا نے نہیں کرنی آگے. ہمیں پالیسیز بنانی ہے, ہم نے بنانی ہے. ہم نے لوگوں کے روزگار مہیا کرنا ہے, ہم نے کرنا ہے. ہم بہت سی چیزیں چھوٹی چھوٹی جو کرنے والی ہیں ہمارے, ہم اس پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں, ہم وہ بگر پکچر پہ چلے جاتے ہیں. اور جو سب سے بڑی لرننگ ہوتی ہے جو میری نظر میں چائنا سے ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اسٹیپ وائز آہستہ آہستہ کیسے چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن نعرہ لگا دیں 5 سال میں پاکستان چینج ہو جائے گا, نہیں. آپ دیکھیں چائنا کی ہسٹری کو 40 سال کے بعد آفٹر 40 ایئرس اب وہ کہہ رہے ہیں 2021 میں ہم ماڈریٹلی ڈیولپ کنٹری ہوں گے, اور ہمارے جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے 5 سال کے بعد پاکستان دنیا کا ڈیولپ ترین کنٹری ہو جائے گا. نہیں, ہم ہی اس کو کٹ کرنا ایکسپیکٹیشن کو. بھائی صاحب یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ سوال کرنا چاہ رہی ہیں. Also I have one question I want to ask you about the finance of the Pakistan. Now I see the rupee is too much going down and the dollar is too much up. And also I know that I hear that in the new government coming and China give around $10 billion to the help for Pakistan. We just get some interest like 3% per year. And also Saudi also give $3 billion to the Pakistan. And during these two countries, they never ask you some hard things for the Pakistan. You must do this and that. And now you get a loan from IMF, and they deposit. They agree with you, give you the $6 billion, but they put them very hard and very difficult. I think in my mind it's totally damaged the Pakistan economics. So what do you think about this? Will bring for Pakistan in the future? Look. IMF کا جو ہوتا ہے اسٹرکچر, جب وہ کسی ملک میں جاتے ہیں ان کا میجر فوکس ہوتا ہے 3-4 انڈیکیٹرز پہ, جس میں ہوتا ہے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو, ٹیکس, اس پہ ہوتا ہے انفلیشن, فسکل ڈیفیسٹ, کرنٹ ڈیفیسٹ. مگر جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اکانومی کو وہ مس کریں وہ ہے پروڈکٹیو سیکٹر. جو چائنا اور پاکستان کا ریلیشن ہے دیٹ از آن پروڈکٹیو سیکٹر, کیونکہ جب تک آپ پروڈکٹیو سیکٹر کو انکریج نہیں کریں گے, مثلا اپنی انڈسٹری کو ریوائیو نہیں کریں گے, ایگریکلچر کو ریوائیو نہیں کریں گے, آپ کی اکانومی ریوائیو نہیں ہونے والی. آپ جتنے مرضی فسکل ڈیفیسٹ کنٹرول کر لیں, آپ جتنا مرضی انفلیشن کنٹرول کرنے کی کوشش کر لیں, بارو کرنا پڑے, آپ کو ریونیو بڑھانا پڑتا ہے. اس لیے لحاظ سے میں سمپل اس لحاظ سے دیکھتا ہوں تو IMF نے اس پہ چپ رہتی ہے. وہ بس کوشش کرتی ہے کہ بچت کریں, لوگوں کے ایسے بھی کریں. وہ جو پرابلمٹک ہے کنڈیشنلٹی. اب جس طرح ہم ابھی سیکورٹی کی بات کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے, تو IMF از اندر انسٹرومنٹ کہ آپ کو یعنی کہ وہ ایک اور طریقے سے آپ کا بازو مروڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کو یعنی ایسے بھی کریں, ایسے بھی کریں, ہمیں وہ بھی دے دیں, وہ بھی دے دیں. اب IMF نے ابھی تک پاکستان میں میری نظر میں کوئی ایسی چیزیں جس کو ہم کہیں پروڈکٹیو ہو گیا 89 سے لے کے اب تک مائکرو کر رہی ہے, مینجمنٹ کر رہی ہیں, یا IFI جو IMF ہو گیا یا IFIs ہو گیا پاکستان میں. اگر پاکستان کی حکومت رسپانسبل ہے بیڈ کنڈیشن کی تو ایکولی وہ بھی ہیں, کیونکہ وہ بھی ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں پچھلے یعنی کہ 1989 سے آن ورڈ آلموسٹ 30 ایئر سے. تو جو آپ بات کر رہی ہیں کہ چائنا نے بات نہیں کی یا سعودیہ نے بات نہیں کی, دے آر فرینڈس. تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان گرو کرے, اور ان کا جو فوکس ہے موسٹلی یعنی کہ چائنا کا ہو گیا, سعودیہ کا یا UAE کا, قطر کا, ان کا فوکس یہ ہے کہ پروڈکٹیو سیکٹر کی طرف جائیں, انڈسٹری میں کوآپریشن دیں, ایگریکلچر میں دیں. صرف آپ کو یہ نصیحتیں نہ کرنا چاہیے, یہ بھی کام کر دو, یہ بھی کام کر دو, یہ بھی کام کر دو. Okay, sir. Now, Mr. Zhao, I have a very hard question I want to ask you. You know, in the social media and TV, some TV, they make a propaganda against China and Pakistan relationship. They say that some agent to
take a lot of interest and money for the manage the people marriage. And now I think for protect this Pakistan and China relationship, and the Chinese government also arranged a team from China come here working with the Interior Ministry. Can you talking with us? Because I hear that many families, they fix on the trouble. They say we are real in love each other. We want to stay in each other. No wrong marriage. Yeah, this is a good question. I think the Chinese embassy is, taking notice of the recent measures by the law enforcement agencies of Pakistan about this, illegal matchmakers. We have noticed, also there's a lot of, stories on the Pakistani media. I should say that number one, both the Chinese government and Pakistani government protect legal marriages. And we are against this, illegal matchmakers. Some of these matchmakers, why we are seeing them, they are illegal. If they are, for example, arranging, the introduction or interview of this, marriages, it is good. But some of them, they have some, more practices. For example, they may, control these Chinese boys who are also victims of, this illegal matchmakers. They may, for example, hold their passports. They may try to restrain their personal freedom. They may, try to, get more money by forceful way, from the Chinese boys. So we try to investigate into, this matter with our Pakistani counterparts. So far, for those cases, we have more than, I think, 140 cases last year. They are already, mostly they are Pakistani girls. They are in China. We investigated this matter. There is only a few isolated cases. There are some problems. The Chinese government, local police, they went to each and every case. Okay. So we investigate. The investigation report is good, and most of the families they are living a happy life. Yeah. But there's, I mentioned there is one girl who wrote a letter to one of your federal minister. Yeah. And then this minister informed your foreign ministry. Our embassy is also informed, and we send the local Chinese government and the police to investigate. She reported some, physical abuse from her husband, and later, we investigated. There was the result is that there is no physical abuse. Okay. But later, this Pakistani lady said, "I don't want to stay here in the family," so they, got divorced. And the Chinese local government bought her a train ticket to send her to Beijing, and then an air ticket to send her back to Pakistan. She came back on May the 2nd. Okay, so there's another case. There's a Pakistani lady. She went to your embassy in Beijing. She complained about. She said there's some harassing from her husband. But she also mentioned to the embassy that the family, the husband treated her very well.
she was treated not like a wife, she was treated like a VIP in the family. And later she decided to go back to her family. Okay, now so there is no problem if any woman who is married to Chinese person wants to come back to Pakistan, if she is not settled there because of her cultural differences and any of the differences, there is no problem at all. Yes, I think so. Yeah, nowadays this is an era of social media. Any family of Pakistan, if they lost the contact, if you can, of course, in China you cannot use WhatsApp easily, but you can use telephone calls, you can use WeChat. Yes. If you lost the contact with the girl, you can report to the Chinese embassy, to your Ministry of Foreign Affairs. We will find her immediately. Okay. So there's no such cases like there's a forced prostitution. Yeah. There's a sale for organ. There's all media propaganda. I'm glad we are discussing this forum here. We will continue this discussion in our next program. We are just short of time, and thank you very much, Excellency, for being a part of our program. और बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी प्रोग्राम में हमारा हिस्सा बने और किरण इस पर मजीद बात भी करते रहेंगे. नाज़रीन, CPEC टाइम से इतना ही. यासिर रहमान और अड़ू आपसे चाहते हैं इजाज़त. अल्लाह ने के बाद.